SBA Publications. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are happy and healthy in your home. This is your mentor Soni Sati, and today with me we are starting our chapter number 5, and the name of our chapter is MS PowerPoint 2016 and Introduction. So अब हम Microsoft Word से launched हुआ MS PowerPoint 2016 version का introduction करने वाले हैं. So let's do the same with me in this chapter. First of all, let's learn what we will learn in this chapter. In this chapter, we will learn explain the purpose of presentation software. So, presentation हम बनाते क्यों हैं और उसका software का क्या क्या काम है. Choose appropriate layout according to the requirement. Now, create, add text and images to the slide. Slide में text कैसे insert करेंगे, images कैसे insert करेंगे. नेविगेट बिटवीन द स्लाइड्स. सो स्लाइड्स के बीच में डायरेक्शन, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी हम सीखेंगे. एंड प्रेजेंट अ स्लाइड शो, और हम कैसे एक स्लाइड शो प्रेजेंट करेंगे. नाउ वी हैव द क्वेश्चन इन वार्म अप, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मीन्स टू प्रेजेंट समथिंग. ओके, here we are starting with the content, that is MS PowerPoint 2016 is a window based presentation software provided by Microsoft company, and it comes as a part of the Microsoft Office and is mainly used for creating and presenting information through presentation in a slide format. So presentation क्या होती है? जब हम slides की form में present करते हैं हमारे content को, okay, हमारे topic को. और MS PowerPoint MS कंपनी से लॉन्च किया हुआ PowerPoint सॉफ्टवेयर है जो हमें इसी चीज के लिए हेल्प करता है. नाउ फीचर्स ऑफ MS PowerPoint. PowerPoint 2016 includes all the features one need to produce professional looking presentation. So first is versatile presentation. PowerPoint 2016 lets you create presentation using predefined templates. So यहाँ पे आपको predefined templates मिलते हैं जिनको आप थोड़ा सा एडिट कर कर अपनी प्रेजेंटेशन प्रॉपर बना सकते हैं. By Microsoft, it is always made in series of slides. So presentation हमेशा एक series of slides में ही बनती है. These slides contain the information the user wants to communicate to the audience. So audience से जो हमें communicate करना है इसलिए हम slide बनाते हैं. इसमें हमारी text include होता है, pictures, charts, videos, sounds, theme, animations, ये सब होते हैं. Now versatile layouts. Layout means कि हम उसको कैसे रखेंगे, boundaries and that kind of things. Now it provides a variety of layouts to be used by the user according to one's need. किसी की भी need के according यहाँ पे हमारे पास variety of templates होते हैं, variety of layouts होते हैं. It helps you to edit and format the slides in user friendly manner. So ये हमें user friendly environment देता है ताकि हम इसे edit कर सके, format कर सके. It allows the user to apply animation, translation and themes to a presentation, make it look eye-catching. Eye-catching means attractive. So attractive बनाने के लिए हम इसमें animation, translation and themes को भी insert करते हैं. Now we have the topic creating a presentation. A presentation is a collection of slides arranged in a sequential order which can be used to teach, provide information, entertainment, etc. Presentation का use क्या है? टीच करना, बच्चों को पढ़ाना. नाउ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अगर कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई चीज़ है जिसे हमें पूरे वर्ल्ड को बताना है, सो वी मेक प्रेजेंटेशन. ओके, सो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प कराता है एंड एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए भी बनाई जाती है. अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ मैनी पेजेस. हियर पेजेस रिफर्स टू स्लाइड्स which are arranged in a proper order to display out information. इन्हें एक ऑर्डर में रखा जाता है ताकि इंफॉर्मेशन आपको करेक्ट ऑर्डर में ही मिले. नाउ इन डिफरेंट वेज. नाउ क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन प्राइमरीली involves the three main stages. Stage number 1, plan, decide and outline for the presentation. Step 2,
Stage 2, execute, create the slides. Now, impress, verify content, add visual effects and practice. Stage 1, plan, deciding and outline for the प्रेजेंटेशन. सो एक प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हमें 3 स्टेजेस पे जाना पड़ता है. सबसे पहले प्लान डिसाइड मीन्स टॉपिक को समझ लेना. ओके, देन उसको हम कैसे बनाएंगे उसकी प्रॉपर आउटलाइनिंग कर लेना, प्लानिंग कर लेना. नाउ एग्जीक्यूट, फिर उसको एग्जीक्यूट करना मतलब एडिट करना, बनाना. नाउ इम्प्रेस करना, इम्प्रेस मीन्स इम्प्रेसिव बनाने के लिए हम उसे इंसर्ट करेंगे, एडिट करेंगे और इसमें काफ़ी सारे हम टाइम स्लैप्स लगाएंगे और ये सारी चीज़ें लगाकर हम इसे इम्प्रेसिव. वेरीफाई कंटेंट कि आपका कंटेंट सही हो, इन सब चीजों से हम बनाते हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्लान, डिसाइडिंग एंड आउटलाइन फॉर द प्रेजेंटेशन. गैदर इंफॉर्मेशन. सो फर्स्टली वी विल डू द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे फॉर द गिवन टॉपिक एंड चूज एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द प्रेजेंटेशन. सो जिस भी टॉपिक पे हमें प्रेजेंटेशन बनानी है हम उस टॉपिक की बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे एंड देन वी will choose a topic, a title for the presentation. Now, go through the information that you have collected. जो भी आपने information collect किया है उसी पे चलते रहेंगे and group related information and list the main points you want to present. So आपको सारा का सारा content नहीं लिखना है. आप क्या करेंगे, points में, सब points में, headings में, छोटे छोटे notes में उसको लिखेंगे. For each main point, list its sub point. So list होगी, उनके points हो गए, उन points में भी और points होंगे तो हम उसे sub points कहेंगे. Now stage 2, execute, creating the slides. So stage 2 होती है हमारी execute करना, हमारे topic जो है उसकी सारी information को execute करना in the slides. Microsoft PowerPoint 2016 is a presentation program of Microsoft Office suite. It is used to create presentation. There are number of pages in a presentation and individual page is called as slide. So हमारी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे पेजेस होते हैं जिसमें से एक पेज को हम स्लाइड कहते हैं, इंडिविजुअली उस पेज को हम स्लाइड कहते हैं. इसमें हम ये एक हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जिसमें हम बहुत सारी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. ओके, now here we have a fact that you have to understand yourself. Now, starting Microsoft PowerPoint 2016. How we start Microsoft PowerPoint? To start Microsoft PowerPoint 2016, follow the given steps. Firstly, click on the Start button. Then select All Apps. Start button, then All Apps. Then click on Window Accessories. And after that, from that list, just you have to click on the PowerPoint 2016. The Microsoft PowerPoint window will appear on the screen. Now, we have the next topic that is components of a Microsoft PowerPoint window. So, आपके पास जैसे Microsoft की window खुल जाएगी Microsoft PowerPoint की, so you will see the components. So many parts of the PowerPoint window. What are these? We can see here. First is this. This is known as slide. जहाँ पे आपको लिखा होगा click to add title by default. Okay, this is known as slide. Okay, now it is a ribbon. We all know MS Word में MS Excel में भी ये होते हैं. That is ribbon. Now so many tabs. So here file tab button and then so many tabs here. After that, at the top we have title bar and at the last we have view button and notes pane and this whole is known as status bar. Okay, और एंड दिस इज नोन एज स्लाइड थंबनेल्स. यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं बिना स्लाइड को ओपन किए. ओके, एंड दिस इज आउटलाइन एंड स्लाइड टैब. सो यहाँ पे आपके पास आउटलाइन एंड स्लाइड टैब होता है, स्लाइड टैब होता है. ओके, सो दीज ऑल आर द components of MS PowerPoint. Some of the labor terms are familiar to you. Let us discuss about the others. कुछ आपको पता है like task bar and status bar and title bar, ribbon. Now we are talking about the others. See, slide. What is slide? It is a current page that is displayed on the window. A slide is like a page of a book that contains information that about a topic. Now outline and slides tab. So outline and slides tab क्या होते हैं? It is a tab in which the presentation appears in two styles. That is outline of the slides and miniature view of the slide. So miniature is जो यहाँ पे आपको thumbnails में दिखता है and outline of the slides जो हम उसके borders रख सकते हैं.
Then we have notes pane. It consists of notes added to the current slide. So अगर हम अपनी slides में कहीं notes रखेंगे, so वो हमें यहाँ पे show होगा. Now file tab button. When this button is clicked, it shows a drop down list of file commands like new, open, save, print, etc. So यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शन होंगे. ये कहाँ पे है? फाइल टैब के अंदर. ओके. नाउ क्विक असेस टूलबार. It displays some quick access buttons like save, undo, redo and etc. So हमें जो जल्दी जल्दी में यूज होते हैं like undo, redo. So ये सारे होते हैं हमारे quick access toolbar में. Now title bar जो हमारा टाइटल दिखाता है, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट दिखाता है. By default, the name displayed is Presentation 1, Microsoft PowerPoint. Now, what is tab? It displays the various groups of commands like Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, View, and Format. These are the so many kinds of tabs. Okay. Each tab consists so many options. Now, ribbon. It displays various commands under different tabs. So ये हमारे बहुत सारे जो भी हम टैब खोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने होम टैब खोला है, होम टैब के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें उस समय रिबन पे शो होगी. ओके. नाउ स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट स्लाइड नंबर वी आर वर्किंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन. सो हम किस स्लाइड पे काम कर रहे हैं, कितने हो चुके हैं, कितना हमने लिखा है, वो सब हमें स्टेटस बार पे शो होगा. दैट मीन्स स्टेटस ऑफ द प्रेजेंटेशन. Now view button. These are quick access button of some of the commands of the view tab. It enables us to view the presentation in different views like normal view, slide view, sorter view and slide short view. So these are the view कि आपको slides देखनी किस तरीके से है. Okay, normal vision से, slide sorter vision से, slide show vision से. Then we have backstage view. Backstage view gives us various options for saving, opening a file, printing or sharing the documents. Go with these tabs to get a backstage view. First is click on the file tab. Then we can choose an option from the left side of the page. To get back of the document, just click any tab of the ribbon and you will go to the back of the document. Creating a blank presentation with design theme. In MS PowerPoint 2016 presentation, we can add a design theme. The design tab on the ribbon displays various design themes which can be used in the presentation. So, presentation में जो design tab है उसमें so many kind of presentation की themes होती है. Okay, उन्हें हम use करके presentation को edit कर सकते हैं. They are prepared. Okay. Now, to create a blank presentation with design theme, follow the following steps. So click on the design tab. Firstly, click on the design tab. Then many themes will be displayed. Click on the theme you want to choose. Now selected theme is applied to the slide. Now entering text to the slide. When you open MS PowerPoint 2016, by default the title slides open. There are two boxes in a slide. Title text placeholder and subtitle text placeholder. So you can add a title as well as a subtitle to that slide. To enter text, follow the following steps. Step number 1 is click on the title text placeholder box and then insertion point will appear. Insertion point means this, a blinking cursor. Okay, type the text from the keyboard simply. After that, we can see this is how you can write the text in a presentation as a title and a subtitle. Now, step 3 is click on subtitle text place holder box. Now the insertion point will appear and step 4 is type the text from the keyboard. Now, adding a new slide. How we add a new slide? After you have added the title and the subtitle of the first slide, you need to add a second slide. So, जब आपने एक स्लाइड में बना लिया टाइटल सब टाइटल लिख दिया तो आपको सेकेंड स्लाइड पे जाना है. सो सेकेंड स्लाइड को लेने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं न्यू स्लाइड ऑप्शन पे. टू ऐड द सेकेंड स्लाइड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप. स्टेप नंबर 1 इज क्लिक ऑन होम टैब. नाउ स्टेप 2 इज क्लिक ऑन द डाउन arrow of new slides. Now tap in the slides group. So आप new slide tab के अंदर slides group के अंदर new slide tab पे जाएंगे. Okay, a drop down list of menu will
appear and then we will select the layout for the second slide. And जैसे ही आप उसे एंटर करेंगे, a new slide will appear as per the layout selected. Add the text to the new slide from the keyboard. So अब जैसे एंटर करेंगे आपकी न्यू स्लाइड आ जाएगी, आप उसमें टेक्स्ट लिखिए फ्रॉम द कीबोर्ड एंड रिपीट द अबव स्टेप्स टू add more slide to the presentation. और ऐसे ही आप 7, 8 and up to 10 and up to so many sheets you can make easily. Now we have a checkmate. Open Microsoft PowerPoint 2016 and add the text to the first slide. Now add a second slide and also add text to it. Now inserting text box. See, text box is used to add text anywhere on your slide. To add the text, follow the following step. Step number 1 is select the slide where you want to add a text box. जहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, वहाँ पे आपको स्लाइड पे जाना है. स्टेप 2 इज क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन द रिबन. अब इंसर्ट टैब पे जाएंगे, देन क्लिक टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम द टेक्स्ट ग्रुप एंड यू विल सी कि आपको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है. नाउ ड्रैग टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट. और आपको उसके बाद उसे इंसर्ट करने के बाद आपको जहाँ पे भी उसे चाहिए वहाँ पे आप ड्रैग करेंगे एंड देन type whatever you want using the keyboard and click anywhere outside the box to continue. Okay. Now inserting word art. Word art is used to insert attractive text in the slide. Word art हम use करते हैं ताकि हम कुछ attractive text को insert कर सके. Okay. To insert word art text, follow the following steps. Step number 1 is click the insert tab on the ribbon. Now step 2 is click word art from the text group. And then gallery appears with different word art styles. Now step 3 is select the style of your choice. You get a word art text box on the slide. Now step 4 is replace the text in the text box with your text and click outside it. And you will see कि आपका word art with the text आ गया है. Now we have inserting slide number. The slide number tells the position of the slide within the presentation. Slide number क्या शो करता है कि हमारी position कहाँ पे है in the presentation, within the presentation. To insert slide number, follow the following steps. Step number 1, click the insert tab on the ribbon. After that, step 2, click slide number from the text group. And step 3 is आपको header and footer पे जाना है जो कि आपके पास यहाँ पे होता है. Okay. Now click the slide number checkbox. उसके बाद आपको slide number checkbox पे जाना है and then click to apply to all button and you will see that slide number has been inserted to the right corner of the each and every slide of the presentation. Now deleting slide. How we delete a slide? See, to delete a slide, follow the given steps. Step number 1, select the slide you want to delete. After that, you will see that उसका left pane में उसको normally vision होगा उसका. Now step 2 is right click on the mouse of the slide which you want to delete. Now आपको क्या करना है? Right click करना है उस slide पे जिसको आपको delete करना है and then press delete key. Okay, the selected slide will be deleted. Now we have the stage 3, that is impress, verify content, add visual effects and practice size. So here we have first point, verify content by doing the following. So सबसे पहले हम content को verify करेंगे. Check if order of slides has a logical flow. Okay, after that if sub points are correctly placed or not. Okay, then we will check if information is accurate and adequate. That means एक proper way में लिखी है और एकदम correct लिखी है. Okay. Then check for content spellings and grammar. After that spellings and grammar को भी हम check करेंगे जो कि हमने अपनी last class में भी सीखा है with the same steps. Then step number 2 is add visual effect by doing the following. अब हम अपनी presentation में visual effect ला सकते हैं by doing these things. Ensure font type, font size are easy to read and alignment is uniform. आपको क्या देखना है कि font size और font का type जो है वो एकदम comfortable है as for the vision and alignment भी जो है वो भी uniform है. Now use colors to highlight important points. So अब आप क्या करेंगे? Highlight करेंगे उन points को जो कि important है. Okay.
एड एनिमेशन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स वेरेवर एप्रोप्रिएट, जहाँ पे भी आपको लगता है कि ज़रूरत है या अच्छा लगेगा वहाँ पे आपको एनिमेशंस और ट्रांजिशन इफेक्ट लगाने हैं. Now, slideshow. MS PowerPoint 2016 has various options for setting up and playing a slideshow. To assess slideshow setup options, follow the following step. The very first step says select the slideshow tab. Okay, and the step 2 is click the setup slideshow command. After that, what we have to do? We have to do step number 3, that is setup show. Okay, the setup show dialog box will appear. And then just click OK to apply the setting of the slideshow. यहाँ पे आपको slide की setting करनी है. And then you have to just click OK. Now we can start a slideshow by pressing F5 function key. Now press enter key and or spacebar key to go to the next slide. Now once the slideshow is completed, press escape key to exit. Now how we save a presentation. Here we have the same steps as we did in the MS Word. So you have learned how to create a new slide and add text to it. Now after entering text to the all slides, you will see we need to save our work for the future reference. Now to save the presentation, follow the following step. The step number 1 is click on File tab button. After that, the backstage view will appear. Then click on Save option. The Save as dialog box will appear. Now step 3 is locate the place where you want to save the presentation. हमें पता है यही हम MS Word के भी साथ करते थे. Now step 4, type the name for the presentation in the file name box. Okay, and then click on just save. Now the presentation will be saved with PowerPoint extension, that is .pptx. ये by default आपके साथ सारी presentation पे लगता है. Okay. Then the name of the presentation will appear on the title bar. Now closing and exiting the presentation. After finishing the work and saving the work, you need to close the presentation first and then exit MS PowerPoint 2016. To close the presentation, follow the given steps. Step number 1 is click on the File button. After that, the backstage view will appear. And then click on Close button, the presentation will be closed. To exit from the PowerPoint, follow the given step. The step 1 is click on the File button. The backstage view will appear and then just click the Exit. Now we have the topic Tips for creating a good presentation. So हमारे पास कुछ tips है ताकि हम एक अच्छी presentation बनाएं. Okay, एक valid and good presentation बनाएं. So you should follow some important tips while creating a presentation so that your presentation could look informative and attractive. आपकी presentation informative and attractive लगे, इसलिए आपको कुछ tips को ध्यान में रखना चाहिए. That are choose an appropriate presentation structure. सबसे पहले जो आप presentation structure रख रहे हैं वो एकदम appropriate होना चाहिए, fancy नहीं होना चाहिए. Okay, topic based on chronological classification by categories, problems and solutions और cause and effect. जो भी आप टॉपिक रखोगे वो आपका एकदम सही तरीके से होना चाहिए. उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी कैटेगरी सही से होनी चाहिए. क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हुई, आपको अगर वो शो करना है तो उसके सॉल्यूशन उसको भी आप अच्छे से शो करेंगे. एंड देन उसके कॉज और इफेक्ट्स भी आप शो करेंगे. डू नॉट ओवरलोड स्लाइड्स विद अ लॉट ऑफ टेक्स्ट. आपको एक ही स्लाइड में या फिर आपको स्लाइड्स में बहुत सारा ओवरलोड नहीं करना है टेक्स्ट का. बहुत सारा टेक्स्ट आपको एकदम नहीं लिखना है बिकॉज वो हमारी बुक्स नहीं है. अगर बहुत ज़्यादा ही टेक्स्ट पढ़ना हो तो हम तो MS वर्ड का कंटेंट पढ़ सकते हैं. बट बिकॉज वी हैव टू मेक MS PowerPoint, we have to make the PPT presentation, so we have to use less amount of text. Now use the PowerPoint notes to remind yourself what to say when a certain slide is being shown. So अगर आप इसकी presentation दे रहे हो, explain कर रहे हो, so always make some notes ताकि आपको याद रहे कि आपको इस slide में कौन से points पे क्या क्या कहना है. Now keep your slide simple. अपनी slides को जितना आप simple रखेंगे उतनी ही वो professional look होगी. Now highlight the most important points and check spelling and grammar also. Prepare a table of content slides with the summary slide feature. Arrange slides according to the
टॉपिक्स एंड यूज डार्क फॉन्ट. ओके, सो आपको ऐसे नहीं रखना है कि आप डार्क पे लाइट करो. ओके, यू हैव टू यूज अ डार्क फॉन्ट. ओके, आपको ऐसे नहीं रखना है कि आप पिंक के अंदर बेबी पिंक यूज करो, सो इट विल नॉट लुक नाइस. ओके, सो use dark font over light backgrounds and light font over the dark backgrounds to enhance clarity. Dark बैकग्राउंड में आपको लाइट फॉन्ट रखनी है एंड लाइट बैकग्राउंड में आपको डार्क फॉन्ट रखनी है, सो दैट इट विल लुक अट्रैक्टिव एंड आपकी जो प्रोफेशनलिटी है आपकी प्रॉपर, ऑल्दो आपकी प्रेजेंटेशन में वो भी अच्छे से इनहेंस हो जाएगी. नाउ की पॉइंट्स. Microsoft PowerPoint 2016 is a presentation program of Microsoft Office suite. We all know. Now, there are a number of pages in a presentation, and individual page is called a slide. Presentation में number of pages होते हैं जिनमें से एक individual page को हम slide कहते हैं. The presentation can be seen on a projector or a whiteboard. Presentation को हम projector या फिर whiteboard पे देख सकते हैं. Outline and Slides tab is the tab in which the presentation appears in two styles, that is outline of the slides and miniature view of the slides. So outline and slides tab में हम क्या करते हैं, दो तरीके से अपनी slides को देख सकते हैं, that is firstly miniature view and the outline of the slides. Now when you open Microsoft PowerPoint 2016, by default the title slides open. So by default आपको click on the click to add subtitle and click to add title वाले by default आपको slide दिखती है. Now after finishing the work and saving the work, you need to close the presentation first and then exit Microsoft PowerPoint 2016. So जब भी आप अपना काम complete कर ले, आपको सबसे पहले अपनी presentation को close करना है, then आपको exit करना है MS PowerPoint से. Now we have chapter exercise which you people will do by yourself with the help of the explanation I just discussed in this chapter, and this activity zone you people will do in your school lab. Now by here we have completed our chapter. I hope each and every concept discussed in this chapter is totally clear to you, and I will meet you in the next video with another chapter. Till then, keep on learning. Take care. Bye bye.